introduce myself now. क्या अच्छा लग रहा है? लाइक पढ़ा रहे हैं टीचर के सामने दिखते हैं ना, सब थोड़ा अट्रैक्टिव फील होता है ना. Yes, I have ordered a new laptop. कल तक आ जाना चाहिए. This old one is like गर्मी इतनी है ना, अभी the old one gets freeze about. So the whole idea was to be keep the camera on. हाँ यार, keep the camera on so that it give you better experience. We'll wait just one more minute. 99% बोल रहा I'll bring in the माइक ऑफ है ना अपने बढ़िया सेटिंग्स में करा था बाहर जाना फोटो से गैलरी में मिलेगा Harsh sends link to Deepak. Yes, sir, I'll share. Okay. Cool. I think most of the people have joined. We'll just start the course, the second session. Before starting, I can see that many people have tried the assignment yesterday. Few of them were facing issues, and few of them were able to successfully complete the assignment. I'm aware about Omkar and Tulika facing issue. I will be sharing few information on how you can fix it. Okay. If after that as well it's not working, let me know. Okay. We can always connect. So moving forward, today we will be learning about Kotlin functions. Very simple, very basic thing about any programming language. Okay. Uh, we will be learning different ways of writing a function, more overview of functions, what are Kotlin functions, okay, and more different things along with that. Okay. But before moving to that, yesterday we missed talking about variables. Okay, so we'll first just see the very basics of variables in Kotlin. Okay, so let me know if my IntelliJ is visible to you all, and the font is visible, like you are all able to see the code and the text here. Okay, cool. Okay, so
my question to you all will be, when we say about variables, when we talk about variables in a programming language, what do you all understand by it? uh, what is the first picture that comes when somebody say variables? You can unmute yourself and share your opinion, share your info on that, or even type on the chat box. Something in which the data is being stored. Correct, correct. Something in which a data is being stored. Okay, correct. Any other thing apart from that? Cool, cool. So, that is uh, true what Harshad mentioned, that we store some value over the memory, okay, in the form of variable. Okay, so basically variable hold some data for us in the memory, so that whenever we need it, we can just use that using this variable reference. Okay, so what is uh, how memory is located and how the reference thing works. It is little advanced concept that we can avoid it for time being. But in short term, we can say variable is something where we can store some data, store some value. Okay, so we'll see few examples of it. Okay, so generally, how we defined a variable in Kotlin is using either the val, val or the var keyword. Okay, we'll first look into the val keyword. Okay, so I have defined a variable with name Niket. Okay, so now, acha, let us take by this example. So here you can see I have just defined a val keyword with the name of variable with some value, right? I haven't defined कि उसका type क्या होगा, क्या type का data hold करेगा. I've just gave it a value 1. Okay, and the the compiler is happy because कोई error नहीं दिखा रहा है, right? So if I just hover over this name variable, you can see it is showing val name of type int. Okay, so generally in Kotlin, how we define a data type is write the name of either the function or class or variable. We then write this colon, and then we provide the data type. Okay, today we will be gonna discuss more about data type, but for just time being, understand it by like that कि किस टाइप का डेटा ही अपन इस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे अब 1 दूंगा ना, तो इट विल नॉट वर्क, राइट? बिकॉज 1 इज अ नंबर एंड नंबर कैटेगरी कम्स either in of type int, double or float. हालांकि we will be discussing about that, but my point is कि when we define a variable, we give it a name, we define the type, what kind of data it will be holding, and the value associated with it. Okay, so now the compiler is happy कि हाँ आपने name variable लिया, okay, and उसका type दिया and उसकी value दी. Okay, so variable contains three things: name, type, and value. Okay, now this is very basic. Now there can be a conditions. Acha, there can be condition when let's take it in this way. Okay, now if I print it, okay, so good morning Uttam. Now let's
made in Kotlin. Okay, we will be learning about the basic types, the primitive types available in Kotlin. Okay, and we will be, though the main topic of the session is functions also, we will gonna discuss that, but also we gonna see the very small overview of classes and objects. Okay, and based on this learning, I will be providing you some assignment, and you can either do it in an Android Studio or IntelliJ. It's totally on your side. Okay. Now coming to the primitive type, just give me a second. So if if you are an Android developer or wanted to be an Android developer, and you want have any doubt regarding Kotlin, or you wanted to learn anything based on Kotlin, this is the best source out there. Okay, the official Kotlin documentation. यहाँ पे आपको सारी चीज मिलेगी that you need for your project or for your learning. Okay, so today, as our topic is containing of primitive type, the basic type in how many ways the Kotlin give us the option to save the data. Okay, तो जैसे हमने अभी देखा था कि अगर मेरे को नाम सेव रखना है, okay, we used to build a variable with type string. Okay, so now this string type that you see here, okay, is being given us by the Kotlin. Okay, so all those primitive types, जैसे कि the things are listed here. Okay, the some of the very basic and widely used are those 4 to 5 things. Okay, these are the standard primitive types or the basic types given us by Kotlin, so we can hold the very common data. Okay, for example, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे पर्सन है. ओके, लेट्स से वी हैव अ पर्सन एंटिटी. पर्सन में वेरी बेसिक थिंग क्या आता है? उसका नाम, ओके, उसका एड्रेस, ओके, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ओके, और क्या आता है? उसका लेट्स से हाइट एंड वेट हो गया. ओके, एंड basically anything, okay, and that a person can have. So now this name property generally consists of a list of characters. Okay, कि अगर एक नेम का अगर मैं एग्जांपल लूँ, लेट्स से निकेश. ओके, इट्स अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर NIKET, right? So Kotlin gives us the very handy string class in which we can hold this data easily in the form of a string like this. Okay, now an address can also be a string. Okay, uh, let's say address can contain, let's say, 18, house number to be 18. Okay, then street number to be, let's say, 20, then the address follows, right? So a string can also be a data type where not only we are able to hold the character, but uh, also the special character, also the number values as well. Okay, so string is very powerful type, and basically we, in most of the cases, in the data conversion, we generally convert things into string. Okay, क्योंकि string से integer बनाना, डबल बनाना, बेसिकली उनको चेंज करना, कास्ट करना बहुत इजी हो जाता है. इन द वाइस वर्सा इजी हो जाता है. ओके, एंड बेसिकली इट कम्स वेरी हैंडी. आप डेटा को कास्ट बहुत इजीली कर सकते हो. ओके, बट द वार्निंग, यू आर अवेयर कि आप कौन सा डेटा कैसे कास्ट कर रहे हो. नहीं तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप निकेत को इंट में कास्ट करने जाओगे तो इट विल नॉट वर्क.
ओके। बट आप 1 2 3 4 को स्ट्रिंग में कास्ट करने जाओगे तो इट विल नॉट गिव यू एन इशू। ओके। तो generally string type is a very powerful and widely used data type in Kotlin. Okay. Now a contact number can be generally a number as well. Okay, but we generally keep it on the base of string only. Okay. Now the height and the thing can be something like 1.72 meter or something. Okay, so this value generally denotes as a double value. Okay, so I'll give you an example. So let's say we wanted to hold a value which contains a precision type till 2 digits. Okay, let's say 5. Okay, so it will be of type double. Okay, with value 3.14. Okay, now let's say some value like gravitational force which is of type float. Okay, where I can denote it as like 9.8 f. Okay, my bad, like something like that. So if it is a single type precision, we generally donate it with a floating value. If it is a more than double type precision, we generally denote it with the double type data type. Okay, and we are already aware about int. Okay, it generally try to hold some value. Okay, but in सब का भी कुछ कुछ लिमिटेशन एंड कुछ कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं. ओके, मेमोरी वाइज and other factors which I will definitely encourage you all to go here. Okay, and read it more about it. Okay, कि इनका कितना लिमिट होता है, इन लोग कितना वैल्यू लेते हैं, कितनी मेमोरी लेते हैं. It's all given here in a such a nice present uh, presentable way. You can always welcome to read more about it. Okay, if you find any new things that is something like astounding to you कि बहुत बढ़िया मजा आ गया पढ़ के, you can also share it with the uh, group as well. Okay, arrays is something that we gonna discuss it in our next upcoming class. But if you are curious, you can always read about it. Okay, so I think I believe we are clear till now कि Kotlin में हम basic data type कैसे hold कर सकते हैं in variables and कितने type के होते हैं generally the common use ones. I hope till here we all are clear. Okay, I can see. Yes, please uh, keep reacting via some emojis. अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो please you can also react like this. Okay, uh, that way it will be helpful for me to understand कि हाँ सब लोग are in the uh, same page. Okay, cool. So we learn about variables, we learn about primitive type. Okay, we now will be learning very basic conditional. Okay, so just a second, give me a minute. मैं एक बढ़िया चीज शेयर करता हूँ. So this is Robert Martin. Okay, he is the. I hope my YouTube screen is visible. Okay, so if you are very curious about
uh, curious about programming and the future of programming and the past of programming, okay, you can always go and see this video. It's such a fascinating video, okay. एंड उसमें एक चीज उन लोग ने शेयर की है, इन्होंने, which will sound you very true even after you've been doing programming for next 20-30 years. Okay, so why it is related we'll gonna see, but मैं ये link आप लोग के साथ share कर दूंगा. Okay, please have a look at your free time. Okay, so uh, we gonna learn about conditional flow. Okay, so generally programming, how it works in Kotlin is कि let's say we have a command 1 here, command 2 here, okay, command 3 here, okay. तो जब मैं इस रन बटन को हिट करता हूँ ना, दिस ड्राइवर फंक्शन गेट कॉल. बिफोर कॉलिंग इट चेक्स कि कहीं एरर तो नहीं है, ओके. इट कंपाइल्स एंड चेक्स फिर तो एरर तो नहीं है, ओके. एंड इफ देयर इज नो एरर देन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन दिस वे, command 1 then command 2 then command 3, okay. So I am sure कि most of the people are aware about this stuff, but जनरली इन प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जो कमांड 4 एग्जीक्यूट होना ये किसी कंडीशन में बेस्ड हो, ओके. वी डोंट वांट टू एग्जीक्यूट दिस कमांड 4 अनलेस एंड अनटिल दैट कंडीशन हैज बीन मेट, ओके. मतलब वो कंडीशन जब तक ट्रू ना हो जाती, ओके. So to uh, to make this implementation part, we have various conditional statements, conditional keywords, which help us to do that in a specific way. Okay, जैसे आप लोग ने बहुत लोगों ने if else के बारे में सुना होगा. That's the most basic thing that we are being using from decades. Okay, 20-30 साल हो गया, we are still using this thing, and it will be there for more upcoming years. Okay, so this is the very basic type uh, of how we change the way of the program based on our given condition. Okay, so uh, for example लेते हैं. So it is very basic, but मैं I thought to just cover it in case if anyone is not aware. Okay, let's say हम एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं. We have a check is user authenticated, okay, of type boolean, जिसकी वैल्यू अपन false रख देते हैं. Okay, now if a user is authenticated, okay, ये हम check लगा रहे हैं. Okay, if the user is authenticated, print uh, uh, welcome, okay. जनरली एंड्रॉयड में ऐसा होगा कि इसकी जगह हम लोग कंपोजेबल दिखाएंगे. यहाँ पे हम लोग होम स्क्रीन दिखाएंगे, ओके. एंड यहाँ पे हम लोग लॉगिन पेज दिखाएंगे, ओके. तो वो हम सब बनाएंगे, बट जस्ट टू कीप इट वेरी सिंपल, ओके. यहाँ पे मैं लग दूंगा लॉगिन, ओके. नाउ इफ I run is, you can see the condition is false, okay. So we are seeing the login statement. So कोड कैसे रन हुआ, पहले ये फन मेथड कॉल हुआ, ओके. फिर ये मेमोरी में ये वैल्यू स्टोर हुई. फिर हमने एक चेक लगाया कि अगर ऑथेंटिकेट है कि नहीं. अगर ये ऑथेंटिकेट नहीं है तो इफ ब्लॉक ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एंड दिस एल्स ब्लॉक गॉट एग्जीक्यूटेड, ओके. तो दिस डजंट गेट एग्जीक्यूटेड. हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गए, ओके. I know this is very basic, but please let me know if this is clear to you. Cool, cool. Okay. Now, I'm aware. I believe we all know the basics of if else.
let's see some other things. For example, for loop in Kotlin. Okay, so let me know अभी तक किस किस ने अपना for loop लिख चुका है, मतलब they are familiar with the for loop in programming in general, मतलब आप डेली यूज करते हैं. ओके, शिवा, तुलिका, हर्ष, आनंद, हाँ ओके, विशेष, कूल. ओके, हाँ तो हाँ हाँ जनरली हमारा ट्रेडिशनल फॉर लूप कैसा दिखता था जावा या जावास्क्रिप्ट में, कि अपन पहले एक वेरिएबल बना देते इंट आई इज इक्वल टू 0. ओके, देन हम लोग बोलते थे कि ये इससे इतना एक मिनट छोटा हो तभी रन करना. देन वी यूज टू डू द हाँ ठीक है इंक्रीमेंट पार्ट, हाँ राइट. हाँ हाँ ठीक आई है आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ ट्रेडिशनल फॉर स्टेटमेंट, राइट. इसके अंदर फिर अपन कुछ कुछ लॉजिक लिखते थे कि हाँ अगर आई की वैल्यू इफ आई इज इक्वल टू समथिंग 2, देन डू दिस, देन डू दैट, राइट. बेसिकली अ वेरी सिंपल. So generally how we write a for loop in Android, okay, is the same, this for keyword. Okay, I create a variable I. Okay, I use this in keyword. Okay, then I give it a range, something like this. Okay, this. Okay, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ. Okay, so देख रहे हो, this is how we are making a for loop in Kotlin. Now you might have noticed कि this is such a concise way of writing a for loop where we know कि variable बन चुका है, हमने conditional लगा दी है, and the value is incrementing every time whenever this block of statement gets completed, right. तो हमें I plus plus लिखने की भी जरूरत है, right. So those small features, those small things that Kotlin have introduced in their programming language, basically JetBrains have introduced in their programming language, makes Kotlin the first preference programming language for any Android developer or Java developer. Okay, so uh, मैं आपको दूसरा फीचर दिखाता हूँ. ओके, अच्छा, लेट मी नो इफ दिस रेंज थिंग इज क्लियर टू ऑल. मैं इसको एक और बार ब्रेक डाउन कर देता हूँ. हमने आई वेरिएबल बनाया. ओके, विच इज टाइप ऑफ अ var टाइप, तभी वो चेंज हो रहा है. इन एक कीवर्ड है. ओके, इन एक कीवर्ड है विच सेल्स दैट कि जो भी होगा इस रेंज के अंदर होगा. ओके, एंड व्हेन आई राइट दिस 0 to 10, जनरली दिस डेमोन्स्ट्रेट कि हमें 0 to 10 का रेंज चाहिए. दिस इज हाउ वी डिफाइन रेंज इन Kotlin. ओके, अब जैसे अगर मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये सब चीज़ फीचर डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है. ओके, आपको रेंज चेक करना है तो आपको ट्रेडिशनल फॉर वे लिखना पड़ेगा. ओके, so these things make Kotlin very very intuitive, very very interesting to learn. Okay, so this is the format. Okay, but जनरली जब हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट करेंगे हमें ना इस टाइप का फॉर लूप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ओके, अभी ये जो मैंने लिखा है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, वी विल बी covering this collection thing in upcoming sessions in proper detail. But abhi just try to be with me for a second. Okay, Harsh, Raj, Yansh. I'm sorry, Bhavyansh, if I'm misspelling it. Okay, Tulika. Okay, and word on card. Okay, so now हमारे पास ये लिस्ट ऑफ डेटा है. ओके, नाउ मैं क्या करूँगा, आई विल टेक दिस वेरिएबल, आई विल
write dot, okay, and I will just do for each, okay. मैं ये for each वाला इनका method call करूँगा, okay. Now instead of doing this, what I'll do this, okay. मैं एक lambda खोलूँगा, okay. मैं इस वेरिएबल का नाम नेम दूंगा एंड मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट बनाऊंगा, congratulations for completing the assignment, okay. एंड मैं यहाँ पे नेम वेरिएबल इस्तेमाल करूँगा, okay. So if I gonna run this, you can see those people name got printed simultaneously one by one. मैंने ना आई वैल्यू बनाई ना मैंने कुछ बनाया, मैंने इस लिस्ट के ऊपर फॉर ईच लूप चलाया और हर नाम के ऊपर जितनी वैल्यूज थी इस लिस्ट में उसने उसने इस वैल्यू को लिया, ओके, एंड यूज दिस इन दिस कमांड टू डू अ सर्टेन ऑपरेशन, ओके. तो पहले ट्रेडिशनली जावा में ये कैसे करते थे, पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाते थे लेंथ, ओके, लिस्ट डॉट लेंथ साइज करते थे, फिर उस फॉर लूप जो ट्रेडिशनल होता था उसमें आई की वैल्यू अपन ऐसे रखते थे लेंथ के बराबर हो, देन अपन लिस्ट का इंडेक्स लेते थे आई का, ओके, समथिंग लाइक दिस, ओके. फिर उस समथिंग से हम लोग कुछ ऑपरेशन करते थे. अब दिस थिंग वॉट एवर आई शेड हियर इज नॉट अ वेरी फिजिबल ऑप्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक डार्ट, ओके. डार्ट में हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है, ओके. so you understood कि how much Kotlin is such a great language to have in our portfolio, okay. It generally makes our life very easier, okay. so हमने फॉर स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, हमने फॉर ईच के बारे में पढ़ा, हमने रेंज के बारे में पढ़ा, हमने इफ एल्स के बारे में पढ़ा, ओके. देयर आर मेनी थिंग लाइक व्हाइल, डू व्हाइल, स्विच, सॉरी व्हेन एंड लॉट्स ऑफ स्टफ, ओके. तो आपका असाइनमेंट होगा फॉर दिस टॉपिक टू print, basically to build a small program using a while statement in Kotlin, okay. I will write it down in the group, but it's a very basic thing that assignment will help you to go through the document and try out different things, okay. तो आप while loop इस्तेमाल कर सकते हो, okay. You can learn it from here, okay. So I hope till now we are good. Okay, I can see only one people, two people. Cool. So moving forward now, okay. Thank you folks for the reactions. Okay, now we will be learning about functions. Okay, very मतलब मैं जब पढ़ रहा था तो it caused me a confusion because मैं Java field से आ रहा था, so I was not able to understand few things. That's why I have designed this code कि if you are coming from any field or if you haven't done programming, ये code आपके लिए है. Okay, so now we will be learning about functions. Okay, अच्छा. Now हमने functions शायद क्लास 11th में पढ़ा था. If someone is from साइंस एंड मैथ बैकग्राउंड, राइट. हमारा पूरा एक चैप्टर था फंक्शंस का, राइट. तो यू विल नॉट बिलीव द Kotlin thing somehow depicts that
मैथमेटिक्स प्रिंसिपल्स ओनली. अगर इफ यू आर इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक आर्टिकल सेंड करूँगा. ओके, हाउ फंक्शनल प्रोग्रामिंग is being happening in various places, but we are aware about functions, right? It generally takes a value, do some operations, and give us some result, right? Cool. uh, Let me know uh, when a term function comes, or a term method comes in a programming, what you all understand. Like, you can write it over the chat, or unmute yourself. Reusable short block of code. Correct, correct. Anyone else? Okay. So, yeah, Tulika was right. We generally, what we do, जैसे मान लो we are building an Android app. Okay. uh, हमने लॉगिन फीचर इम्प्लीमेंट किया, हमने होम स्क्रीन किया. ओके. हमने फिर अकाउंट स्क्रीन बनाया, हमने फिर मेन फीचर बनाया, हमने फिर नेविगेशन वाला कुछ चीज़ बनाया. ओके. जनरली व्हाट वी डू, वी डिवाइडेड दिस थिंग्स इनटू डिफरेंट फाइल्स, राइट, ताकि द थिंग्स रिमेन manageable, divided, so that we can always navigate to different files, different features whenever we are done. Okay. तो होता क्या है, जब कोड ना बहुत बड़ा होने लगता है. ओके. जब बहुत बड़ा होने लगता है ना, तो रीडेबिलिटी बहुत कम होने लगती है. ओके. तो व्हाट वी जनरली डू, वी डिवाइड our program into small chunks. Okay. उससे होता क्या है, not only it increase the readability, also it help us to manage the code easily. Okay. And the very important thing कि हमें वो चीज़ दोबारा नहीं करनी पड़ती. Okay. So I'll explain it with an example. पहले we will gonna learn how we can define a function, what is the syntax, and uh, different uh, topics, different properties of. Okay. So generally, how we define a function is the fun keyword in Kotlin. We give it a name. Let's say greeting. Okay. We give it a this parenthesis. This is important. Okay. Now we give it uh, a return type. Okay. We create a curly bracket. Okay. We define a return. Acha, sorry, my bad. Okay. We define the return keyword, and we give it a value. Okay. Something like this. Uh, okay. Array. Okay. Something like this. So what we have learned so far in the function, कि fun is the keyword. Okay. मैं ये the reason why I am devoting so much time on this small basic thing, because जब in when the course will move forward, when we will be learning about higher order functions and lambdas, ये ना चीज़ें फिर बहुत confuse करेगी. Okay. So if you learn this thing very basic, then आपको future में problem नहीं होगा. Okay. So we define the keyword with the fun. Okay. Then we give the name of the function. Okay. Then we give parenthesis like this. Okay. Now then we give us the return type. Okay. So this is the basic syntax of how we write a function in Kotlin. जब ये हो जाता है,
देन वी गिव द कर्ली ब्रैकेट, एंड अगर हमने रिटर्न टाइप डिफाइन किया है तो हमें रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है. ओके, सो दैट द फंक्शन नो कि हाँ भाई ये जो 8 लाइन नंबर ऑफ कोड है इसमें मेरे को जो भी चीज़ गिवन रहेगी मैं इस फंक्शन से रिटर्न कर दूंगा अपने पेरेंट पेरेंट जहाँ पे भी कॉल हुआ है वहाँ पे. ओके, पेरेंट प्रोग्राम. तो I hope till here we all are clear कि how we can define a simple function in Kotlin. Cool, cool. अच्छा, now अब इतने से सिंपल चीज़ से बात नहीं बनेगी, राइट? कि हमने खुद का फंक्शन बनाया उसमें खुद का ऑपरेशन कर दिया. That is not the very brief use case of function. Generally क्या होता है, functions में we take value. Okay, the whole point is about taking some value. So I will take uh, example as a name. Okay, and now what I gonna do, I will use it in our string like this. Okay, now uh, this is generally how we call a function. Okay, मैं काम करता हूँ, इसको मैं अभी रिटर्न टाइप नहीं देता, इसको मैं ऐसे नहीं करता, मैं प्रिंट एलन यहीं कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडेबिलिटी. हम जनरली क्या करते हैं, अगर हमें फंक्शन कॉल करना पड़ता है तो वी जनरली कॉल्ड इट लाइक दिस वे. ओके, एंड आप यहाँ देख सकते हो द कंपाइलर इज नॉट हैप्पी. इट इज सेइंग कि आपने फंक्शन कॉल तो किया है बट मेरे को एक पैरामीटर चाहिए इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस कोड. ओके, तो इफ आई प्रेस कमांड पी, ओके, आप लोग अगर इफ यू आर यूजिंग विंडोज इट विल बी कंट्रोल पी, एल्स इट विल बी कमांड पी. ओके, तो आप कमांड पी टाइप करते हो तो यू गेट द ऑप्शन टू सी द नंबर ऑफ पैरामीटर इट इज रिक्वायर्ड. ओके, तो अगर मैं यहाँ नेम लिखता हूँ, नाउ द कंपाइलर इज हैप्पी, आई प्रोवाइडेड द नेम. ओके, एंड इफ आई ट्राई टू रन दिस, cool, we are able to see some output, right? तो मैं यही कोड जो यहाँ पे करना चाह रहा था, ओके, instead of this I am calling a method, okay, and it is doing it for me uh, uh, without expressing in the main program. Okay, now जैसे मेरे को ग्रीटिंग मैसेज करना है फॉर सम अदर पर्सन, ओके, लेट्स से एनीथिंग राहुल, तो मेरे को ना ये चीज़ दोबारा नहीं करनी है. आई विल जस्ट कॉल दिस फंक्शन अगेन विद द डिफरेंट वैल्यू, एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट इट आई विल गेट दिस आउटपुट. ओके, so generally with the help of functions we try to achieve this thing that do not repeat yourself. Okay, हमने एक चीज बना ली, we gonna use it regularly over the program to keep it consistent. Okay, cool. Now जब हम composable पढ़ेंगे, okay, तो there might be a chances कि ना ये जो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होंगे ना, जनरली वी कॉल इट पैरामीटर, ये बहुत बड़ा होगा. ओके, तो मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे इसको रेदर देन दिस आई विल कॉल इट अ फर्स्ट नेम, इंस्टेड ऑफ दिस आई विल डू दिस. ओके, और what I'm gonna do, I will take another variable of type, let's say this, let's say country हम लोग ले लेते हैं of type string. Okay, now you can see मैंने जब यहाँ पे दो दो वेरिएबल ऐड कर दिए हैं, ओके, द कंपाइलर इज सेइंग कि नहीं, वी आर नॉट हैप्पी. आपने दो वेरिएबल अगर ऐड किए हैं तो यू हैव टू प्रोवाइड इट हियर एज वेल, राइट? अगर मैं कमांड पी कंट्रोल पी दबा रहा हूँ
So you can see it is saying कि last name and country is needed to be provided. Okay. So let's say मेरे को last name पता है, मैं last name अगर इसका करता हूँ, मैंने इसका जैन दे दिया. Okay. And let's say मैंने इसमें last name सिंह दे दिया. Okay. Now अब मैं हर बार कंट्री नहीं देना चाहता. आई एम नो कि माई my customers or whatever the program is running is totally based on in country India or basically anything which is consistent or common. मैं ना इस वेरिएबल का वैल्यू हमेशा यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता, राइट. आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कंट्री नहीं भी दिया है, फिर भी द कंपाइलर इज हैप्पी नोइंग कि अच्छा आप मत दो, मेरे को पता है कि कंट्री की वैल्यू ये रहेगी. ओके. बट इफ यू वांटेड टू चेंज इट, लेट्स से वी वांट टू मेक इट जर्मनी. ओके. स्टिल वी कैन डू दैट. ओके. हमने यहाँ पे कंट्री वेरिएबल का वैल्यू को ओवरराइड कर दिया. ओके. विद दिस थिंग. ओके. We can see. Okay, so we'll just see this how it's gonna work. Good morning Nikesh, are you from India? Good morning Rahul, are you from Germany? Right. So इससे हमने क्या सीखा कि there are ways where we can define parameter. Okay. There are ways where we can give default value to a parameter, and what we also learned कि uh, we can also define parameters with their name value. Okay. अगर मैं इसको हटा दूं, okay, इसको हटा दूं, तो there can be a chance, though the ID is intelligent enough कि मैंने इसको order wise दिया है, so it is gonna work. but अगर मैं इसका name हटा दूं और आपने जैन दे दिया स्ट्रिंग समझ के और निकेत दे दिया लास्ट नेम समझ के, तो आपका पूरा कोड रिवर्ट हो जाएगा, राइट. तो जनरली इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप अगर फंक्शन बना रहे हो तो ऑलवेज गिव द नेम आर्ग्यूमेंट. ओके. दिस इज द वन ऑफ द फीचर्स ऑफ Kotlin. ये बहुत टाइम तक बहुत सारी लैंग्वेजेस में नहीं आया था. ओके. which was leading to problem. Okay. So those are the features that we can use very easily in Kotlin. Okay. यही चीज़ मेरे को डार्ट में करनी पड़ती है, तो मेरे को स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड कीवर्ड देना पड़ता है. ओके. एंड दैट थिंग इज टोटली फ्रस्ट्रेटिंग. ओके. So that's are the, some of the small but quite good features of Kotlin. हाँ, मैं थक गया. मेरे को ये बताओ, till now are we clear with the basic syntax, the name parameter, the default parameter? हमने जाना कि रिटर्न टाइप कैसे देते हैं. till now are we are all clear? We are good to go. Cool. I can see only 2 people reacting. What about others? Cool, cool. Again, folks, this course is meant to be for someone who is very beginner or just starting with Android. That's why we are keeping the base things and explaining in such a detail. Because होगा क्या, when we will be building large applications ना, ये चीज़ें confuse कर सकते हैं. ओके. ये अपन जब नेक्स्ट क्लास में चीज़ें थोड़ी एडवांस होगी ना, तो we will get to know हाँ मतलब why those things were important. Okay. So that's why I'm taking time to elaborate those stuff, just so that you all understand it better. Okay. So generally हम let's say we have this scenario. Okay. Now the expression is giving
error saying that कि आपने इस फंक्शन से एक रिटर्न टाइप एक्सपेक्ट किया है, ओके दिस इज द रिटर्न टाइप, एंड आपने रिटर्न कीवर्ड नहीं दिया है, ओके। सो लेट्स से कि आपका फंक्शन बहुत छोटा है, आपको पता है कि आखिरी वैल्यू, या आपने इतना अच्छा नाम दिया है कि द डेवलपर इज अवेयर कि ये मेथड हमें वही चीज़ रिटर्न करेगा, तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, हम इस कर्ली ब्रैकेट को अवॉइड कर सकते हैं, इवन हम एक सारी चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, और हम जनरली इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। जनरली हम एक फंक्शन को एक वेरिएबल टाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। इफ योर फंक्शन इज जस्ट अ वन लाइनर, आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। एंड इफ आई रैप इट दिस थिंग इन अ प्रिंट स्टेटमेंट, ओके, okay, so the thing is gonna work as it was previous, okay. So it's just a small way of making our code more readable and concise, okay. Cool. uh we are all good with the function. Now we will be learning about method overloading, okay. So have anyone heard about term method overloading? हमने अपने कॉलेज की फर्स्ट आई मीन थर्ड सेम में पढ़ा होगा मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। Sir, it's a part of polymorphism. Correct. So we will see how we can do that in Kotlin, okay. So generally what we do, let's say कि हमारे पास एक फंक्शन है, what can be, let's say distance covered, okay. अब हमारे पास ये मेथड है which takes a value, let's say in kilometers, okay, in kilometers, okay. Just to keep it very simple, I am taking it as of type string, okay. Okay, now अब इसमें हो क्या रहा है, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है कि डिस्टेंस कवर्ड, ओके, एंड दिस थिंग जनरली टेक्स द वैल्यू इन किलोमीटर ओनली। लेट्स सपोज अपने पास मान लो कुछ टाइप है विच टेक्स इन किलोमीटर ओनली, ओके। नाउ आई वांटेड अ मेथड इन माय util that मैं डिस्टेंस कवर्ड कर पाऊँ in meters as well, okay. So अरे ओके, नाउ यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो फंक्शन है उसका काम ये है, इंफॉर्मेशन ये है कि डिस्टेंस कवर करना है, ओके। नाउ हियर द थिंग इज कि ये both the functions are being covering different kind of distance and doing some different operations. अगर किलोमीटर है तो we are doing this, अगर मीटर है तो we are doing this. Generally example sense नहीं बनाता, but I'm just showcasing how a scenario can occur, okay. इसके हम लोग लाइव एग्जांपल देखेंगे when we will be dealing with collections and different APIs, okay. So now you can see the compiler is giving me an conflict saying that भाई
आप दो फंक्शन विद द सेम नेम रख लियो तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरे को ये वाला कॉल करना है कि ये वाला कॉल करना है, राइट? तो इफ एनी केस अकर कि आपका फंक्शन का नेम सेम है, ओके, बट इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट वैल्यूज, तो आप हमेशा जब भी एक पैरामीटर अगर आप चेंज कर दोगे ना, ओके, तो एंड बेस्ड ऑन द इनपुट यू गिव वो कंपाइलर वो वाला फंक्शन ले लेगा, ओके। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। so so this thing is something we are covering in kilometers, तो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। नाउ यू कैन सी we have the same name but having different parameters, right? तो अगर मैं किलोमीटर में करूँगा तो मैं कुछ भी वैल्यू दे दूंगा, ओके, बट इफ आई वांटेड टू डू इन मीटर I will put it something like this, okay। Now as the value changes the execution of code changes, okay। So if we run this, the output is like in kilometer wise we are getting this, in meter wise we are getting this, right? So the point is कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको फंक्शन नेम सेम रखना है, ओके, बट द वेरिएबल बट द पैरामीटर्स कैन डिफर, देन दिस थिंग इज कॉल्ड द फंक्शन ओवरलोडिंग, ओके। कि हम सेम नेम रख सकते हैं विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, क्योंकि अगर सेम सेम हो जाएगा तो द कंपाइलर विल से कि आप इसको मत बनाओ, आप डायरेक्टली यही इस्तेमाल करो, राइट? So that was a very silly example, but I hope you understand about basics of method overloading, क्योंकि ये चीज़ बहुत एक्सेसिवली यूज होगी जब अपन कंपोजेबल पढ़ेंगे। तो let me know if we are okay with that। correct, same but different। I hope we are clear till now। Cool, cool, thanks। Okay, now before proceeding with the very base very fundamentals of proof concept, मैं आपको थोड़ा बहुत क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ इन Kotlin, so that in the next class we will have more clarity, okay। This is not meant to help you learn about proof concept in this session, it is meant so that in the future sessions whenever anything we are gonna do in custom, you are aware कि अच्छा इसको क्लास बोलते हैं, इसको मेथड्स बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ओके। So my basic question again, when we use this term class in a programming language, आपके माइंड में पहली थिंग क्या आती है कि इस क्लास से अपन क्या समझ रहे हैं, व्हाट इज इट अबाउट, क्लास होता क्या है? इफ समवन वांट्स टू आंसर। A group of objects, but simply a group. ओके, एनीवन एल्स? यू कैन राइट इट ओवर द चैट एज वेल। ओके, so considering you all been learning about class for the first time, so basically class in general is about the blueprint of an object you wanted to see, okay। uh, okay, so when we defined a class, okay, तो कंपाइलर को ना कुछ ऐसी पिक्चर दिखती है, अच्छा, कि अगर मैं कभी भी उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, माय बैड, अरे
just a second. Okay, I hope it is visible. Okay, so कभी भी मैं कोई पिक्चर बन कभी भी मैं कोई क्लास बनाऊंगा तो कंपाइलर को ऐसी एक पिक्चर मिलती है कि हाँ भाई तेरे ऑब्जेक्ट का कुछ ब्लूप्रिंट ऐसा रहेगा. ओके, व्हाट आई मीन, लेट मी एक्सप्लेन इट. जस्ट अ सेकेंड. तो फॉर एग्जांपल अपन बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं अ पर्सन का. ओके, नाउ व्हेन आई डिफाइन दिस, द कंपाइलर नो कि हाँ पर्सन एक चीज है. ओके, नाउ दिस प्रोग्राम नो दैट पर्सन इज वन काइंड ऑफ अ थिंग. नाउ हम उस पर्सन में प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे. ओके, तो मैं इसमें प्रॉपर्टी दूंगा कि इट इज ऑफ टाइप, इस पर्सन का एक नाम होगा. ओके, इस पर्सन का लास्ट नेम होगा. ओके, इस पर्सन का कुछ एड्रेस होगा. Okay, let's say you are working at for the government and building some application based on the Aadhaar card. Whatever the value comes, we are creating a blueprint of that properties that Aadhaar card can hold. Okay, address हो गया, कुछ unique number हो गया, let's say. Okay, so let's say it is of type string only. Okay, and there can be n number of things for a function. Okay, now इससे क्या हुआ, नाउ द कंपाइलर नो कि अगर आप देर इज अ एंटिटी कॉल्ड एज पर्सन. ओके, आपने इसका ये टाइप प्रॉपर्टी दे दिया कि पर्सन कैन होल्ड दिस नंबर ऑफ टाइप. अब मैं क्या कर सकता हूँ, बेस्ड ऑन दिस आई कैन डू सम एक्शन. ओके, तो हम फिर से कुछ फंक्शन बनाएंगे. प्रोवाइड पर्सन डिटेल. अभी के लिए बहुत सिंपल हम वो लेते हैं एग्जांपल विच विल गिव अस अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग. ओके, तो मैं एक डिटेल करके एक वो बनाऊंगा वेरिएबल. आई विल यूज दिस handy method. Okay, and I will do this. Okay, name of type name. अच्छा, in order to use this property we have to define it inside a variable. Okay, now I can use it something like this. Okay, now I will append some space. Okay, now I will do this, I will make it as address, I will do this as address. Okay, I will do this something like this. Acha, then I will just return the details. Okay, now this is a very basic example of class. ओके, हमने एक एंटिटी बनाई विच इज नेम्ड एज अ पर्सन. हमने उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दी कि भाई इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, एंड यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी डन सम एक्शन ओवर दिस थिंग. ओके, तो हमने जितना भी अभी यहाँ पे किया है ना, इसमें से ना इट डजंट इफेक्ट द मेमोरी. ओके, इट इज ओनली फॉर द कंपाइलर. He compiler know that there is an entity called person who has this number of property and this number of actions that we can do on this class. Okay, so uh, person class generally help us to create a blueprint of our required object, or generally help us to design some entities with some properties and do some actions over it. Okay, now ये थोड़ा सा सेंस नहीं बना रहा होगा, but what wanna what we wanna do with the end goal
एज अ क्लास इसकी मैं इससे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ओके, ऑफ टाइप पर्सन, ओके, एंड मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के लिए ये सारी चीज प्रॉपर्टीज दूंगा, ओके। so let's say the name will be Niket, the last name uh, the last name will be of type Jan, okay. Now the address will be of type anything, let's say, okay. The unique number, let's say of Aadhaar card is something gibberish, okay. एक सेकेंड, ये हो क्यों नहीं रहा है, नॉट श्योर, ओके। तो हमने अभी क्या किया, हमने क्लास बनाया विद द नेम पर्सन, हमने उसमें कुछ प्रॉपर्टी सेट की कि दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विद दिस नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, ओके, एंड हमने फंक्शन बनाया विच यूज दिस प्रॉपर्टीज टू अ सर्टेन ऑपरेशन, ओके। let's say we wanted to add more functionality, we can always add more methods and do more operations on it, okay. So this is generally the blueprint, this is generally how we tell the compiler कि भाई मेरे को इस टाइप ऑफ का डेटा होल्ड करना है, आई एम डिफाइनिंग द क्लास। मैं अगर जब भी इसका ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट करूँगा और ये चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, आप मेरे को वो ऑब्जेक्ट बना के दे दें, ओके। तो जब मैं ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके, तो इन द मेमोरी यहाँ पे मेमोरी में एक पर्सन नाम का वेरिएबल बन जाता है विच जनरली रेफरेंस टू दिस क्लास कंटेनिंग दिस वैल्यू, ओके। तो फॉर एग्जांपल मेरे को पर्सन डिनोट करना है, तो जनरली मैं इसको स्ट्रिंग टाइप से नहीं कर सकता, राइट। अगर मैं स्ट्रिंग टाइप से कर देता हूँ तो मेरे पास कैपेबिलिटीज नहीं है कि मैं उसका एड्रेस भी दे पाऊँ, उसका यूनिक नंबर भी दे पाऊँ, ओके। हमें कॉटलिन ऐसी कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता, बट कॉटलिन हमें ये बोलता है कि आप उसका क्लास बना लो, आपको जैसा भी टाइप का चाहिए, आप उसकी खुद की प्रॉपर्टीज सेट कर लो आपको जैसा चाहिए, और उसके बेसिस पे आप ऑपरेशन करो। बट इन द बेस we are using the basic types of Kotlin only, string, integer, anything, okay, anything like this. So uh, what we learn कि अगर हमें कुछ कस्टम बनाना है, we generally define in a class, okay. Now this is not the this is only the first step, हमने क्लास बना लिया, देन हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओके। ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, तो हम उसके फंक्शंस को ऐसे हम कॉल कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज हाउ वी जनरली डू सम ऑपरेशन ऑन अ ऑब्जेक्ट, ओके। तो दिस इज द सिंटैक्स, हमने पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाया बाय गिविंग द वैल्यू, बेसिकली दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। इसके बारे में हम डीप डाइव करेंगे, बट हमने इसकी प्रॉपर्टीज दी जैसे हम एक फंक्शन में देते थे, एंड वी जस्ट कॉल दिस मेथड, राइट। हमने इसको कॉल किया, एंड इफ आई ट्राई टू रन इट, मैंने ये सब चीज़ दी थी, यू कैन सी माई स्ट्रिंग इज ब्यूटिफाइड, मैंने नेम और एड्रेस पूछा था एंड मेरे को ये मिल गया, राइट। तो आई होप इतना बेसिक वी अंडरस्टूड कि दिस इज द क्लास which generally is just a blueprint, doesn't take any memory, but when we create a object, the memory is taken in a memory, and जब इसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं, we can generally call them using this dot, and then we can call this method, right. Let me know if it is clear till here. I can see only one person. What about others?
नाउ यू कैन ऑल्सो सी कि जब मैं ये पर्सन बना रहा हूँ, ओके, एंड आई एम हिटिंग दैट डॉट मेथड, मेरे को बहुत सारी चीज़ Kotlin प्रोवाइड करती है, लाइक लेट ऑल्सो रन, राइट। ये ना, ये चीज़ वी विल गोना डिस्कस इन डीप डाउन, बट आपको ये थोड़ा बोल्ड टाइप में ये कुछ और प्रॉपर्टीज दिख रही होगी, एंड वी कैन assure that this property is something that we have set for this, right? अब इसमें क्या हो रहा है, मैं अपने पर्सन क्लास को उसके बाहर से भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट। अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट करूँ, ओके, हमने लास्ट टाइम नहीं प्रिंट किया था ना, हम लास्ट टाइम दे देंगे, ओके। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, you can see the gen thing that we provided in our class, we are able to access it, okay. Let's say in order you don't want your local variables to get your properties to get access by outside, generally हम क्या करते हैं, हम अपनी properties को private बना देते हैं। By default they all are public, but in generally in Android what we do, हम इन सबको private ही बना के चलते हैं, okay, so that nobody can access it from the outside। अगर ये चीज़ें आउटसाइड से होती हैं एक्सेस, इट्स नॉट अ गुड थिंग। when we define the class, we generally want to keep it private, so that based on that only we can do certain operation। ऐसा ना हो कि इसकी वैल्यू कोई चेंज कर दे, इसकी वैल्यू रेफरेंस चेंज हो जाए, वी डोंट वांट टू डू दैट। इससे होगा क्या, जो चीज़ें जो इसको नीचे इस्तेमाल कर रही है, द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट माइट गेट चेंज, ओके। so I hope till now we understood the basis of Kotlin class and Kotlin object. Till now, if anyone have any questions, please feel free to share it share it now. Yes, sir. Not a kind of a category, uh, a blueprint for a compiler. A class is a blueprint for a compiler which can hold some data, customized data for, okay. There can be more precise, concise definition for it, but generally how we want we will use it is something like a blueprint कि हमने अपना क्लास ऐसे डिजाइन किया है, ओके, टू हैंडल सम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ओके। द रीजन आई एक्सप्लेन दिस इज, जब हम वीक वीक 4 में जब अपन डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ रहे रहेंगे ना, तो दिस थिंग इज गोना बी वेरी वेरी एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी डेप्थ, ओके। कि क्यों हमें इसको बाहर से नहीं करना चाहिए चीज, कैसे हम ऑब्जेक्ट को स्मार्टली बना सकते हैं, ओके। यू विल बी लर्निंग अबाउट वेरियस थिंग्स, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, इनिट ब्लॉक एंड many many things, okay। Kotlin has very rich features when it comes to the class, okay, but that's pretty much it for today। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है, please feel free to share it now, or else we can call it a day and we can then wrap up the session. Cool, cool. Okay then, I can see there are no further doubts. We can wrap it up. I will be sharing the new assignment of whatever things we have learned so far, okay, in the group itself. But I will also highly encourage you all कि आप documentation पढ़ो, कुछ नया सीखते हो तो share it in the group, okay। So by that ना ही आप भी सीखोगे, आगे वाले को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, okay।
And as always, I will see you tomorrow at the same time, 8 to 9, 9:30. Okay. Tomorrow we're gonna be learning about more features of Kotlin. Okay. So that's pretty much it. Thank you for giving your time. See you tomorrow. Bye bye.